हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं जनरल पेशेंट असेसमेंट। ये सेक्शन 1 है। इसके आगे मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगी, तो आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़ें ताकि पेशेंट जो आपके पास आते हैं उनसे कैसे हिस्ट्री लेनी है और डायग्नोसिस कैसे बनानी है, तो सारे मैनेजमेंट वगैरह आपको सर चीज़ों के बारे में, इन चारों टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए। वही हो जनरल पेशेंट असेसमेंट। ओके, सो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल सके। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वरना आपको हर एक चीज़ें स्किप कर जाएंगे। तो पहला है डॉक्टर अगर है तो वो कैसे ट्रीट करता है अपने पेशेंट को आ रहा है तो उससे कैसे हिस्ट्री लेता है वो आपको पता चलेगा इसमें। और जनरल पेशेंट एग्जामिनेशन और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में आपको पता होगा। और नेक्स्ट एक स्टेप होगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना एंड इनिशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चलेगा एंड एथिकल कंसिडरेशन के बारे में पता चलेगा। सो आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो आप इसको पूरा देखें ताकि इससे सारी जानकारी आपको मिल सके और आप अच्छे से हर एक चीज़ें जान सकें। तो यही है जनरल असेसमेंट कैसे करते हैं। तो डॉक्टर और पेशेंट के जनरल प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं। तो डिक्शन यही है कि इफ़ आस्क व्हाई दे इंटर मेडिसिन, मोस्ट डॉक्टर वुड से दैट दे विश टू रिलीव ह्यूमन सफरिंग एंड डिजीज़। यदि पूछते हैं, जब मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली डॉक्टर वुड से दैट वी शुड रिलीव ह्यूमन सफरिंग एंड डिजीज़। जो सफ़र कर रहा है और डिजीज़ है से जो सफ़र कर रहा है उससे मेडिसिन में जाने से मतलब सारी चीज़ों से पता चल पाए। सो मतलब कि उसको सब कुछ नहीं पता चल पाता है। सो आप लोग ध्यान देना। Hello guys, if asked why they entered medicine, most doctors would say that they wish to relieve human suffering and disease. Uh, in order to achieve this aim for every patient, it is essential to understand what has gone wrong with normal human physiology in that individual and how the patient personality, belief and environment are interacting with the disease process. History taking and clinical examination are essential. Uh, are essential uh, initial but crucial step of achieving that understanding. Uh, Even in an era in which the ability of sophisticated investigation might suggest to a lay patient that a blood test and can will give all the points. In addition, in even though may disease many reasons are now curable, the relief and symptom is usually what the patient expert that the medical process. The phrase clinical method is used less than it used to be. It can be defined as the set of skilled doctors use to diagnose and treat disease and manner in which doctors approach clinical problems or relate to patient if that make up. Uh,
methods are required during a lifetime of medical work and evolve, and changes are new technique and new concept arise, and the experience and maturity of the doctor develop. Clinical methods are required by the combination of study and experience, and there is always something new to learn. The aim of any first consultation are to understand patient one perception of their problem and the start and complete the process of diagnosis. This uh, knowledge and doctor double aim required knowledge of disease and patient is presented together with ability to interpret a patient's symptom or the patient report, complaint and cough and headache, and finding on observation or physical examination called physical sign, and often simply sign appreciate skill needed to elicit the symptoms from the patient, and description and conversation and sign of observation, and the physical examination require not only experience and considerable knowledge of pupil in general, but also the skill to strike up a relationship in a short space of time with the range of every different individual. There are two main steps of making diagnosis: to establish the clinical features and history, and examination the presentation clinical database, and second है तो second to go to interpret the clinical database in terms of disorder, function, and potential causative pathologies, whether physical, mental, social, or a combination of these. This book is about the process. First chapter introduces the basic principle and history, taking an examination, while more written about history and examination of each system. Cardiovascular system is set out of individual succeeding chapter throughout the book, and patient refer to her and editor to and subsequent information.